Ivory आज is relevant for anybody who's ever heard any memory concern in their house. इस हफ्ते में 3 बार घर पे चाबी भूल गया. It has never happened to me before. Today my father forgot his way back home. I'll actually tell you a customer who's from Bombay. She was repeating वो अपने maid को जो बोल रही थी, cook को जो बोल रही थी कि ये खाना बनाओ, वो 2 घंटे में बार-बार बोल रही थी. There are only 3,500 doctors of neurologists. From my Healthify Me experience, I knew that कि जब January आता है, तो people always want to sign up for new gym, new nutrition. हमेशा वो resolutions बहुत होते हैं. लेकिन brain care के लिए कोई resolution नहीं. I think that is unimaginable. It's bigger than any bank balance that I can have or any car that I drive. My mother was 84 years old and does not play mobile games. हमने उनको बोला कि नहीं, आप ये टेस्ट will not be right for your mom because she is not familiar with mobile games or using the mobile factor. आपको negative adverse results आ जाएंगे and you will consider it will be a false negative. Right. Hi, my name is Issac John. I am a startup entrepreneur. I work in the field of memory care. As you all might know, there is often this sentiment that's expressed in our households, which is about, आजकल मैं कुछ ज़्यादा भूल रहा हूँ या फिर आजकल मैं, अपने दोस्तों के नाम इतनी तेज़ी से याद नहीं कर पाता हूँ. And often we tend to brush these concerns aside. Ivory's role is to help you understand whether that is a serious concern or not, or whether it's a part of normal aging. Okay. So thank you so much, Issac, for joining us on this podcast and hosting us. I hope audience learns a lot from this podcast. So my first question is, what is your background and how did the idea of Ivory came into your mind? Thank you for having me, Aditya. It's a pleasure to be on this podcast and talk about Ivory's journey with you. Same. Coming to your question, my background has primarily been in marketing. I have, from the first job that I picked up, I was actually used to be a call center agent, wherein I used to fix customers' computers and then I used to sell them something that, Dell wanted to sell. So I've always enjoyed this act of talking to customers, and I continued that after my MBA. I joined Hindustan Times, which is a newspaper, very popular in the north and almost like a national newspaper. Spent a few years there, then joined sports marketing, then got deeper into sports marketing with Puma, then worked with Healthify Me. And then my last role was with Discovery Plus, where I had a P&L role. But before that, all of my journeys were actually very closely linked to marketing. Right. And how did the idea came and how did you decide to quit your job? Because it's a very big decision for any entrepreneur. So I think that's I want to know. So it had been, like I said, 14, 15 years just working on different brands. I had sold clothes, I had sold shoes, I had sold, newspapers, weight loss plans, content, discovery content. And I felt that when it comes to the needs of the 25 to, 40, 45-year-old, the needs are very, actually largely met. ऐसी कोई आपकी ज़रूरत नहीं होगी आज जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे नहीं available है. So I came from the point of view that what about people who are in the post 45 plus age group? How are their needs being met? And when it came to, let's say, things like health, things like memory care, things like, what they should do to keep their memory sharp, there is almost no, a trusted solution out there in the market. So that kind of kept gnawing at me. I always wanted to build something for the older audience, but I was not sure what. Then I happened to meet my co-founder, Rahul Krishnan, at an co-founder residency matching program run by Antler. We started discussing different, ideas. And there we realized that, both of us were actually from Kerala. So we had a very shared family, upbringing, middle-class values. You leave Kerala to go abroad. I mean, that's what Rahul did. I stayed in India. Kerala definitely go a lot more, to the UAE and stuff. So he did the whole part. I had done my part in Bombay, Bangalore, Delhi. And we both felt that our parents were left alone. And the deeper reason was that I was a single parent child. My dad brought me up. Rahul's father was an early widower. So we felt like we both had personal skin in the game to actually work on this problem. So through a series of iterations, through a series of different product concepts, experiments, MVPs as we call it,
we realized that memory care is something that we should go deeper into. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोगों को क्या करना चाहिए अपने मेमोरी को शार्प रखने के लिए, इसके बारे में जानकारी अभी चाहे यूट्यूब में हो या कहीं पे भी, या तो वेस्टर्न है, जो भी नॉलेज है वो वेस्टर्न है, या फिर क्रेडिबल नहीं है. व्हाट्सएप मैसेजेस पे आ रहे हैं कि आप पता नहीं धनिया पत्ते खा लो या those kind of nuskhes, like but what does taking care of your memory really entail? That's something that both me and Rahul were extremely passionate about, and that's how we zeroed down on the present concept of Ivory. Right. And time कितना लगा आपको ideation से actual में product launch करने में? Because I think product launch is something India में थोड़ा difficult है, right? Yeah, so that's a great question. Now I would say this current version of the product is actually our fourth version, okay, which is जिसके साथ हम अभी marketing कर रहे हैं. हमारा conviction हर iteration के साथ बढ़ता गया, वो एक चीज़ हुई. लेकिन सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट था वो करंट वर्जन से काफ़ी अलग था. इट वाज टू डू विथ पेंटिंग लर्निंग, संस्कृत लर्निंग, स्टोरी राइटिंग लर्निंग, क्योंकि हमें लगा कि मेमोरी को अगर ठीक करना है देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप एंगेज्ड. एंड ये रिसर्च भी कहता है कि अगर आप नई चीज़ें सीख रहे हो देन यू कीप योर मेमोरी एक्चुअली प्रीटी शार्प. बट द थिंग इज दैट कि लर्नर जो ऑडियंस है वो इंडिया में काफ़ी लिमिटेड है, राइट. लाइक आई थिंक देयर इज अ larger portion of audience which just wants to consume. So creation mentality is actually very not that high. So we had a very, I would say, a mildly successful experiment with that. We were earning good money, but we realized कि वो audience set is very rich. So our original goal of reaching each and every household was not getting met. Right. Then, my co-founder Rahul, he actually put together a very quick and dirty kind of a prototype जो उन्होंने 4 हफ्तों में बना के he floated it on the Play Store, and that had a bunch of brain teasers and all of that involved. उसमें हम लर्निंग वाला एस्पेक्ट हमने तभी भी रखा था, बट देन फिर हमने लर्निंग हटा के योगा, वेलनेस, मूवमेंट ये सब डालना शुरू कर दिया. एंड देन वी रियलाइज दैट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट विच हैड ब्रेन टीजर्स एज एन एंगेजमेंट, कि पीपल आर इंटरेस्टेड बिकॉज दे वांट टू सॉल्व पजल्स, दे वांट टू जस्ट लाइक हैव फन, दे वांट टू प्ले विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. दैट पोर्शन वाज डूइंग रियली वेल, एंड पीपल वर रियली इंटरेस्टेड अबाउट एवरीथिंग दैट वी वर डूइंग ऑन द न्यूरोलॉजी साइड. तो उससे हमें पता चला कि इंडिया में न्यूरोलॉजी का जो फील्ड है वो इतना लिमिटेड है. देयर आर ओनली 3,500 डॉक्टर्स ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, राइट. एंड वो भी काफ़ी इंटेंस केसेस में बिजी रहते हैं. वो ब्रेन स्ट्रोक्स हो गए, ब्रेन हेमरेजेस हो गए. तो मेमोरी केयर जैसी प्रॉब्लम जो थोड़ी सी फजी प्रॉब्लम है कि क्या हुआ है ये समझ में नहीं आता है, उसको सॉल्व करने के लिए देन वी गॉट ग्रेटर कन्विक्शन कि इंडिया में अगर आप कार्डियक ले लो, डायबिटिक ले लो, या फिर इवन मूवमेंट रिलेटेड ऑर्थोपेडिक्स ले लो, द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट्स अवेलेबल इज अ लॉट मोर. डॉक्टर्स पर कैपिटा जो है इन तीनों फील्ड्स में एक्चुअली इज लॉट मोर देन न्यूरोलॉजी. सो देन वी रियलाइज दैट द मार्केट एक्चुअली हैज अ जेन्युइन नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अबाउट द माइंड, हाउ टू टेक बेटर केयर ऑफ योर मेमोरी, एंड दैट्स हाउ वी जीरो डाउन ऑन द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ. आई थिंक यू डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और आई थिंक वही काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पाइवेट करते रहो. जब भी हम किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करते हो, वी सी कि दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग before zeroing on their current idea. Right. तो उसके बाद जब आपको आइडिया आपका फिक्स हो गया ये करना है, तो देन हाउ डिड यू स्टार्टेड मार्केटिंग द प्रोडक्ट? बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए समझना कि ऐप हम बना सकते हैं, आइडिया वी कैन थिंक ऑफ, बट एक्चुअली में लॉन्च करके उसको लोगों तक मार्केट करना है. योर field is marketing. So I want to understand that. Yeah. Look, there are 2-3 things that we have done fairly fundamentally solid as far as the marketing is concerned. So सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जानकारी लोगों के पास कम है, तो उसके लिए हमने इनफैक्ट you two are an expert in this, Aditya, that that things like Money Mint exist because you want to provide people the right guidance, so that when you have good articles and trusted people on your website, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे आएंगे, कंज्यूम करेंगे, एंड फिर शायद वो एक लिंक इधर से शेयर करें. that builds a funnel of its own. So the first thing we did was actually build this pool of credible information, and we signed up like a bunch of neuropsychologists, psychologists to actually talk
to people in very simplified terms about what taking care of your memory means. What does a term like dementia mean? Alzheimer's का मतलब क्या होता है? तो ये सब हमने एक ब्लॉग के स्टार्ट, ये प्रोडक्ट से पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया था. देन व्हाट हैपेंड इज दैट कि फ्रॉम माय हेल्थिफाई मी एक्सपीरियंस आई न्यू दैट कि जब जनवरी आता है तो पीपल ऑलवेज वांट टू साइन अप फॉर न्यू जिम, न्यू न्यूट्रिशन, हमेशा वो रेजोल्यूशंस बहुत होते हैं. लेकिन ब्रेन केयर के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं है. आप कोई भी कंपनी इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द ब्रेन केयर स्पेस. तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप फ्लोट किया जिसमें हमने लोगों को पूछा कि हम 30 डेज का एक जनवरी ब्रेन बूस्ट चैलेंज करेंगे. वहां पे फिजिकल एक्टिविटीज के तो बहुत होते थे, हेल्थीफाई में भी करता है, फिटर करता है, हर कोई करता है. तो हमने ये जब स्टार्ट किया, ये कॉन्सेप्ट लोगों को काफी यूनिक लगा. एंड आवर कंटेंट टीम एक्चुअली स्टार्टेड पुटिंग टुगेदर ब्रेन टीजर्स एवरी डे ऑफ द वीक. और बड़े इंटरेस्टिंग पजल्स होते हैं. कभी कभी स्पॉट द डिफरेंस, कभी मतलब 4 ऑप्शंस के साथ में हमने आपको एक विजुअल पजल प्रेजेंट किया, कभी हमने आपको एक रिडल प्रेजेंट किया. एंड आवर एंगेजमेंट वाज लाइक रियली रियली सॉलिड. दिस इज ऑन सोशल मीडिया है, दिस इज, ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे किया, बट हाँ सोशल मीडिया पे हमने प्रमोट किया, हमने ब्लॉग पे प्रमोट किया. तो 2-3 जगहों पे हमने प्रमोट किया. सो पीपल वुड कम टू लर्न अबाउट हेल्दी एजिंग एक्सेट्रा ऑन द ब्लॉग एंड फ्रॉम देयर दे कैन जॉइन द ग्रुप. तो 2-3 फनल हमारे ऐसे बने. हमने फेसबुक पे भी मार्केटिंग की बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट टुडे एस्केप पेड मार्केटिंग इफ यू वांट लाइक मोर एंड मोर पीपल. बट वेरी क्विकली वी एंडेड अप हैविंग 3,500 प्लस पीपल ऑन द 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स. दैट वी रियलाइज दैट एक्चुअली इंडिया में हम हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस था उसमें हमने रियलाइज किया एक्चुअली वी आर रनिंग अ वेरी वेरी लार्ज व्हाट्सएप ग्रुप. इनफैक्ट वो करके हमें पता चला कि 2000 से ऊपर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो तो यू कैन नॉट डू थिंग्स लाइक पोल्स और मल्टीपल फीचर्स आपकी चली जाती हैं. तो काफी थोड़ा सा एक हैकी तरीके से किया. लेकिन दोज 4,000 पीपल, ऑब्वियसली 3,500 ग्रू टू 4,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फिर हमने उसको कंसोलिडेट करना शुरू किया. वी स्टॉप्ड न्यू यूजर एक्विजिशन. बट उसके बाद जब हमारे नए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च करे एक्सेट्रा, हम पहले उधर डालना शुरू कर दिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमारा ये ट्राई करो. तो हमको पता चल गया कि ये वाला क्विज चल रहा है, ये वाला गेम चल रहा है, व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. सो दैट हेल्प्ड अस build that initial momentum. So when our app launched, it wasn't, as Rahul likes to call it, it wasn't launched to an empty room. There were already people who knew about the concept of Ivory. So that is how we started. And then of course today hamara 40% of people just discover us purely on the basis of the keywords that we have in the app, which are games for active minds, brain games. So those are some of the things that help us. So we became sharper and sharper on the content side of things. And then of course now people today discover us through like we have our own podcast and like we do a lot of expert doctor sessions, we do webinars. तो ये सब हमारे low cost acquisition medium बहुत अभी बढ़ गए हैं. So that's how more and more people got to know. यहाँ एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आपने जो यूजर बनाए व्हाट्सएप यूजर्स, वो कैसे एक्वायर करे? बिकॉज आपने पहले टेस्ट कर लिया उनके पास और आपने ऐसा बोला ना एम्प्टी रूम में नहीं लॉन्च किया. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आई थिंक. तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, तो रिमेंबर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स दैट वी वर टेलिंग यू दैट वी हैड डन. तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, हम उससे जैसे हमने स्टोरी राइटिंग के करीब एटलीस्ट 200 लोगों के साथ में हमने फ्री ट्रायल्स किए होंगे. ऐसे ही फ्री हमने न्यूरोलॉजी सेशंस फ्री ट्रायल्स किए होंगे. तो ये जब हम इनिशियल में मार्केट करते थे, थोड़ा बहुत हम 2-3 हफ्तों के लिए 2-3 दिनों के लिए फेसबुक पे ये एडवर्टाइज करते थे कि ये हमारा वेबिनार आ रहा है. तो वो हम करते एंड आई विल आल्सो टेल यू जस्ट प्योरली फॉर एनीबॉडी हु इज वाचिंग इट एंड इट्स ऑफ इंटरेस्ट, वी नेवर स्पेंड मोर देन लेट्स से 7,000-8,000 रुपीज ऑन दीज कैंपेन्स, ऑन दीज एड्स. ओके, तो 1,000 रुपए का एक डे या फिर 1,500 रुपए का एक दिन, एंड वो 7 दिन आप चलाओगे तो आपको एक वेबिनार के लिए 200-250 लोग मिल जाएंगे. वो 200-250 लोग अगर आपने 10 बार कर लिए, then it becomes 2,500-3,000 people. So when we launched the WhatsApp group, we already had a base that we had collected across these multiple experiments that we had done. So that is what helped us get that initial 2,500. I think ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, जो भी अगर कुछ अपना बिल्ड करना चाह रहा है उनके लिए, कि पीपल ऑलवेज आस्क यार बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, बट लाइक यू आर टेलिंग कि आप एक कैंपेन पे सिर्फ 1,000 या 1,500 रुपए खर्च कर रहे हो. करेक्ट. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक टेक अवे है यहाँ से कि कोई भी कुछ बिल्ड करना चाह रहा है तो डोंट स्पेंड टू मच, जस्ट स्टार्ट टेस्टिंग द वाटर विद योर एड्स, राइट? 100%. एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल आर वर्किंग और नॉट. इनफैक्ट हमें तो ये भी पता है कि जब हम लैंडिंग पेज करते थे, हम सिर्फ ये देखते थे कि लोग कौन सी चीज में ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं. स्टोरी राइटिंग में ज्यादा फिल कर रहे हैं, संस्कृत में ज्यादा फिल कर रहे हैं, म्यूजिक में ज्यादा फिल कर रहे हैं, या पेंटिंग में ज्यादा कर रहे हैं. तो उसमें हमको ये भी पता चल जाता था कि कौन सा कोर्स हमें लॉन्च करना चाहिए. सो दोज आर सम वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स. एक्चुअली वी डिडंट डू एनीथिंग exceptional, I would say, but whatever we did really well. It was fundamentally very solid. So how is Ivory different from any other thing that is in the market? और अभी market कितना बड़ा है वैसे?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आइवरी, पहले मैं आइवरी का डिफरेंशिएशन बताता हूँ. सो आइवरी आज इज रेलेवेंट फॉर एनीबडी हु इज एवर हर्ड एनी मेमोरी कंसर्न इन देयर हाउस. ओके, तो मेमोरी कंसर्न जैसे मैंने बोला कि इट कैन कम इन समथिंग एज सिंपल एज कि इस हफ्ते में 3 बार घर पे चाबी भूल गया. इट हैज नेवर हैपेंड टू मी बिफोर. राइट. एंड इट कैन बी समथिंग एज सीरियस एज कि टुडे माय फादर फॉरगॉट हिज वे बैक होम. Okay, so वो range है. Ivory's secret sauce is to actually tell you whether the forgetfulness that you're having is it a part of normal aging, जो हम सबके साथ होगा. आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा. Science says that हमारा brain जो है हर दशक में, हर decade में 5% shrink होता रहता है. तो उसकी effectiveness थोड़ी कम होती रहती है. वो normal aging है. लेकिन अगर आप एक accelerated path पे हो, so imagine a normal aging path decline like this, an accelerated path goes like this. ये जब होता है, इसको इधर पकड़ने की बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन प्रिवेंट इट हियर एंड देन अरेस्ट इट. अगर ये बिल्कुल नीचे हो गया, सो डिमेंशिया जो बोलते हैं, अल्जाइमर्स डिमेंशिया स्पेशली, इज अ कंडीशन व्हिच डज नॉट हैव एनी नोन ट्रीटमेंट. इसका ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई ड्रग अवेलेबल है. अगर अवेलेबल भी है तो बहुत छोटे लोग, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटीज में मिलते हैं, और बहुत महंगी दवाई है ये. मतलब $60,000 आप समझ सकते हैं. मतलब इट्स लाइक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव medication. So $60,000 for your viewers, like Indian viewers, it's almost like 50 lakh करीब महंगी एक डोज. So imagine, annual cost. Annual cost. तो बहुत महंगी चीज है ये. तो that is why it is important that we catch these these dips or these concerns right in time. तो आइवरी सबसे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम आपको एक साइंटिफिक वे में बताएंगे कि आप डिमेंशिया के रिस्क के पाथ पे हो या नहीं हो. आपका नॉर्मल एजिंग पाथ है या आपका डिमेंशिया का एक्सेलरेटेड रिस्क के पाथ है. एंड अगर आपका एक्सेलरेटेड एजिंग पाथ है तो फिर हम आपको बिल्कुल पर्सनलाइज करके आपको बताते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए. शुड यू गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड गेट एन MRI डन? शुड यू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन? शुड यू एक्चुअली नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल? और शुड यू जस्ट कंटिन्यू प्लेइंग गेम्स ऑन आइवरी एंड कम बैक फॉर अ चेकअप इन 6 months? शुड वी डू अनदर कंसल्टेशन with you? तो ये काफी पर्सनलाइज्ड एक ऑप्शन हो जाता है जब हम आपको एक रिस्क पैरामीटर्स आपके असेस कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ आइवरी इज डिफरेंट. वी डू अ क्लिनिकल असेसमेंट which is FDA registered. Our neuropsychologists are from some of the acclaimed hospitals of India. So we very strong clinical foundation in terms of how we deliver this. I think मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं उस एज में नहीं हूँ. राइट. आपने बताया कि किसी को भी हो सकता है, तो क्या वो एज होती है जब मतलब आप असेस करना शुरू कर सकते हो ये सारी चीजें? What is the correct age? So science says that it's actually after the age of 40 that your brain starts declining by 5% every decade. But we believe, in fact, our clinical team actually says that if you're even up to, let's say, 45, you're actively working, you have a social circle, you probably don't need to get tested unless some of the साइंस जो बहुत अपेरेंट हो जाते हैं, जो बहुत मतलब बिल्कुल लगता है कि ये क्यों हो गया. मैं आपको कुछ साइंस के बारे में बताता हूँ कि जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग अगर आपकी इम्पेयर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है दैट देयर इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली गेट डिटेक्टेड फॉर. सो टिपिकली वी वुड से दैट बिलो 45, आपने एज स्पेसिफिकली पूछा, बिलो 45 इफ यू आर एक्टिव, यू आर वर्किंग, यू हैव अ गुड सोशल सर्कल, यू प्रोबेबली डोंट नीड दिस. नाउ ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हम आपको यू शुड बी अ लिटिल मोर वरिड? राइट. फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रिपीटेडली अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं जो आपको मतलब इट्स द बैक ऑफ योर हैंड, आपके लिए बहुत आसान है, हमेशा आप करते रहते हैं, लेकिन आप गलती कर रहे हैं. आप डे टू डे फंक्शनिंग में लंच खाना भूल गए 3 days in a row, घर का रास्ता भूल गए. One of the most telling signs which unfortunately comes rather late is that a family member का नाम भूल गया. So those become the more serious signs. But any of the previous 2-3 signs, neuroscience says that anything that जो आपको डे टू डे फंक्शनिंग जो आप करते आ रहे हो उसमें अगर आपको इम्पेयरमेंट हो गया, लाइक नहाना भूल गए और पता ही नहीं है कि जब शाम को पूछा कि कब नहाए हैं, या फिर कौन सा डे ऑफ द वीक वो दोबारा मतलब बोल नहीं पा रहे हैं कौन सा डे ऑफ द वीक. दीज आर थिंग्स विच आर कंप्लीटली लाइक इन आवर वर्ल्ड व्यू. सो दोज आर बिकम सम ऑफ द साइंस, बट टिपिकली
post 45 is when we say that you should get tested maybe once every 18 to 24 months. Okay. That's the prescribed frequency that I think we suggest. जो हमारी हैबिट्स हैं अगर हम वो भूल जा रहे हैं डे टू डे बेसिस पे तो मतलब इम्पैक्टेड है, राइट? अच्छा, आपने बताया कि एक नॉर्मल एजिंग होती है और एक डिक्लाइन एजिंग होती है, राइट? तो डिक्लाइन में आपने बोला अगर हम यहाँ पकड़ लें डिमेंशिया को, तो इज इट ट्रीटेबल? क्योंकि नीचे जाके तो आपने बोला कि $60,000 या $50,000 कॉस्ट। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. सो द आइडिया ऑफ इनफैक्ट अ लॉट ऑफ न्यूरोसाइंस कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू enable what is known as early detection. Now, early detection is typically known as mild cognitive impairment or early dementia. Different clinicians use different terms, but मैं बिल्कुल simplified तरीके में आपको बताता हूँ कि the sooner you catch it, the better it is. Okay. And there are neuroscientific tests which will tell you today that are you average, below average, at risk, or completely normal. Okay. So that is essentially the way in which we deliver the assessment. तो जैसा आपने बोला कि कहाँ पे पकड़ना चाहिए, the sooner the better. Okay. Now let me come to the second part of the question, that whether it can be treated or not. तो इस पे actually एक worldwide बहुत famous study है, finger study इसको बोलते हैं. Okay. Finger study पहले हुआ था Nordic countries में, और इसमें इन्होंने participants को जो impaired थे, उन participants को लेकर उन्होंने एक framework बनाया, which included good eating habits, nutrition, physical movement, exercise, cognitive training like brain games, puzzles, learning new things, etc. And fourth is mindfulness, meditation, and then there was also an aspect of social mingling. तो ये 5 factors मिला के इन्होंने एक framework लगाया और participants को they observed over years. And what we realized is that, and what they realized is that people who do a mix of all of these things actually reduce dementia risk by 40%. Okay. And now that study is also being done in India. It's being done as IISc as one of the partners. Okay. Of course, it's a longitudinal study because आपको लोगों को काफी सालों के साथ observe करना पड़ेगा. Right. But there is, and इस पे एक बहुत popular paper भी है जो Lancet, which is a very well-known medical journal, उन्होंने इस पे काफी description काफी like elaborate way में इन सबको describe किया है कि ये factors पे work करने से you are able to reduce your risk. So risk reduction framework is well known. So that is essentially what people can do to affect like changes in their life. Right. यहाँ पे एक important question मुझे ये आ रहा है कि जैसे पहले आइवरी के पहले कैसे डिटेक्शन होता था एंड विद द हेल्प ऑफ आइवरी अब कैसे डिटेक्शन हो रहा है और क्या डिफरेंस? Great question again, Aditya. I'm very happy you're asking me these questions because this is something that we strive to educate. Right. So आइवरी से पहले people would typically actually या तो सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर अपने जीपी के पास जाएंगे. आई एम श्योर व्हेन you think about your parents, उनको कोई भी अगर खटकती है, कोई भी हेल्थ में कोई भी चीज खटकती है तो सबसे पहले जीपी के पास जाते हैं क्योंकि वो रिश्ता जो है 20-25 साल पुराना रिश्ता है, राइट? आई एम श्योर इन नोएडा योर पेरेंट्स ऑल्सो हैव समबडी. तो वो जीपी के पास एक्चुअली कोई टूल्स नहीं है. सो जीपी टिपिकली आपसे यही सब सवाल जानना चाहेगा कि डे टू डे फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है कि नहीं हो रही है, नॉर्मल एजिंग है. It is not a very scientific evaluation कि at what degree of risk is a person कौन से degree of risk है. And for a lot of good GPs will actually refer you to a neurologist, okay? या फिर a neuropsychologist. The neurologist will, like I said, depending on the specific type of neurologist that person is, if he is specialized in cognitive decline, because neurology में भी काफी specializations होते हैं, तो उसमें वो या तो एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को रेकमेंड करेंगे जो आपका एक पेन एंड पेपर टेस्ट लेगा. वही टेस्ट हमने एक्चुअली आज डिजिटाइज कर दिया है. तो इफ यू थिंक अबाउट द यूजर जर्नी, यूजर गोइंग टू जीपी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, वहां पे बैठ के 45-50 मिनट्स टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट लेके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं. इट इज अ लॉट ऑफ कस्टमर फ्रिक्शन एंड उसमें काफी पैसे भी खर्च होते हैं. Exactly. And traveling also involved. And traveling also involved for an audience which is, obviously would want to avoid travel. Right. Ivory's today does something known as a cognitive health checkup, which gives you a level of dementia risk, which gives you your cognitive performance across 23 different skills. And alongside we also look at your other lifestyle parameters, और हम एक comprehensive report आप बना के देते हैं, which actually you can go and tell a neurologist directly कि Ivory has called out that I am at medium risk. Is there any medication that I need to take, or do I need to go for an MRI? Right? So it helps cut through that entire journey. And for a fraction of the cost that the customer is paying earlier, we essentially are able to give you a very comprehensive clinical assessment of where you stand in your
dementia level of risk. So that is how Ivory's assessment is different than anybody else. आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर हो गया कि कस्टमर जर्नी क्या है. एक बार अगर आपके ऐप पे आए तो व्हाट्स द कस्टमर जर्नी? Yeah. So today we are driving everything through the website. Okay. तो वेबसाइट पे आके या तो आप अपना चेकअप बुक कर सकते हैं या आप ऐप पे आके एक कॉग्निटिव एज टेस्ट कर सकते हैं. तो दो जर्नीज हैं आज. Right. क्योंकि हमें लगता है कि अगर किसी को इमीडिएट, एंड ये भी हमारे दो प्रोफाइल्स हैं एक्चुअली. Some customers, they just want to know their cognitive health assessment done. They are very sharp की working हैं, busy professionals हैं, so they just, and they have had some family history या फिर कोई recent health event है, so they want to essentially eliminate all of these other potential triggers in their life. Right. तो वो immediately आके सिर्फ health checkup करना चाहते हैं. They may or might not go to the app. On the other end, we have the app which actually does a cognitive age test. तो जैसे आदित्य, if you are X amount of years, हम आपका एक cognitive age test करके बता सकते हैं कि आपका cognitive age जो है वो आपके physical age से ज़्यादा है या फिर it is in line with your physical age. So that gives us some idea of whether you are at risk or not. So customer can go through that journey and then come into the funnel of getting the cognitive health checkup assessment done as well. Right. So those are the two journeys that are possible today on the app. अच्छा, एनी केस स्टडी विच यू लाइक टू डिस्कस विद द ऑडियंस जिससे उन्हें आइडिया लगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या अभी तक आइवरी ने करा है? Very happy to share that. Number one, that I'll actually tell you a customer who's from Bombay. 80-year-old mother there was a lot of irritability that the daughter was sensing. She said that she was repeating, वो अपने मेड को जो बोल रही थी, कुक को जो बोल रही थी कि ये खाना बनाओ, वो 2 घंटे में बार बार बोल रही थी. तो वो उनके लिए एक ट्रिगर बन गया था कि what is this particular situation that she is finding herself in. उन्होंने फिर they got in touch with us. They had read about us on our website and then got in touch with us. When we actually delivered the assessment, it was slightly below average cognitive performance. There were some risk factors on the other side as well, but customer, तो हमने जो actionable points दिए, they were largely linked to 3 things. One was improving some physical activity. Right. Second was some social, like assimilation. क्योंकि वो ज़्यादातर अकेली रहती थी, बच्चे चले जाते थे काम पे. तो 3 months later, we did a follow-up consultation with this lady, and she constantly sends me messages that my mother-in-law is doing much better. I'm very happy with what I have done. Right. So I think that is the power of Ivory, that we are able to impact a person's life, and it's unsolicited feedback. I think that is the purest form of feedback. जब customer आप बिना पूछे customer आपको बताता है. So that is one. The second thing where Ivory has a big impact is actually that of helping people who have seen very intense episodes of family risk. उनके life में उन्होंने देखा है कि they have seen one of their parents suffer from dementia and they are very worried for themselves. So उनके लिए we've been able to actually call out whether they are at risk or not, and if they are at risk, what they should do. And obviously family history, like I said, आप change नहीं कर सकते हो, but this is something that really matters in the long run. So people like them, they feel relieved. Right. Working professions feel relieved that on the Alzheimer's dementia side of things, they have less to worry about and they can focus on just being the best version of themselves. Post-COVID also, people have a lot of fear कि मेरे को जो brain fog हो रहा है, is it related to something serious? So at least we are able to rule out those conditions for them. Or of course, if there are conditions of risk, then we direct them to the neurologist. I want to stop now, but I'll give you one more example. The other day, one gentleman reached out, again, 80-year-old, who wanted to actually do a test on Ivory. And her mother was 84 years old and does not play mobile games. This example I'm giving you because I want to tell people that just because somebody wants to do a test, Ivory and our clinical team, we actually don't tell people that, test कर लो. हमने उनको बोला कि नहीं, आप ये test will not be right for your mom because she is not familiar with mobile games or using the mobile factor. आपको negative adverse results आ जाएंगे and you will consider it will be a false negative. Right. So you should actually go to a neurologist in person and do ABCD test. Right. So that advice was also very highly valued. Although it had nothing to do with Ivory, but Ivory was in a position to guide the customer on the right path. These are the things that
people struggle with. Right. So those are, like a few examples where, we made a difference in people's lives very early in our journey. Right. Wow. I mean, I got goosebumps. Okay. So what is the goal of Ivory? Where do you see yourself in the next 10 years? So we are beginning with something that is extremely relatable. आज हर घर में मेमोरी केयर का कंसर्न एक पेरेंट को होता है, या तो कभी एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है, या फिर द सन और डॉटर एक्चुअली has some concern, is my father or mother okay? So the way we see Ivory is that if we can make this access to memory care, ये जो मतलब memory care के जो information है, जो assessments है, ये हम इतना accessible और simple कर दें that a customer from the comfort of their home can, get it ruled out. Today, imagine you can find out so many conditions of risk by just, going on an app like Orange Health or, Newberg, या जो भी diagnostics हैं, Metropolis, etc. Right? But आप 50 कंडीशंस रूल आउट कर सकते हो, लेकिन आज एक ब्लड टेस्ट नहीं है जो आपको एक अल्जाइमर्स डिमेंशिया से आपका रिस्क रूल आउट कर सकता है. दैट रियली इज द पावर ऑफ आइवरी, कि सिटिंग फ्रॉम योर होम you can know whether you're at risk or not and who should you go to. So I think just completing that loop. So we, from a vision perspective, we believe we are relevant. We're going to be relevant for every Indian household which has a parent at home, and even for people who are working post the age of 45, like I said. But that is just the starting point for us. The other thing that we have realized, Aditya, in this journey is that कि जब हम customers से बात करते हैं, we realize that the customer is having so many excess medications. There are 5 doctors, who are, they are talking to. There are other ailments. So, I'll give you this one statistics. 1 out of 2 patients, customers that we have, tell us about a problem that they have not told anyone. Okay. 1 out of 2. Well, that's the level of trust. That's the level of trust that we have. So that gives us, that actually empowers us in a way to affect their life positively in an even deeper way. And that is something that, has to be highly personalized. तो वो जवाब मैं आज नहीं दे सकता कि Ivory उसके लिए क्या करेगा. But the fact that every, 1 in 2 customers is telling us something that they have not told anybody is an extremely powerful motivator for Rahul and I to build Ivory, to the max of our capacity. So what are your initiatives you are planning to, make the reach of Ivory to nation, all the people have access? So what are we currently aiming for, right? So देखिए, direct to consumer is definitely going to be a key mode, and that is one. Second is actually initiatives like these. I think awareness and advocacy is extremely important, and it has to be brought in by individuals like you, people who have like larger forums, etc. So एक layer हो गया D2C, एक layer हो गया awareness and advocacy through as many options as possible. Right. The third layer is actually, for Ivory to have inroads into hospitals and clinics through what we are going to call virtual memory clinics. Somebody comes into a hospital or a GP even, and instead of them going through that entire journey, can they essentially, shortcut that journey? Right. So that's essentially the third option. The fourth thing is we also believe that on a diagnostic side, today in India, if I have to take a guess, there are probably 80 to 100 million people who take diagnostics of some sort during a year, right? किसी भी एक चीज के लिए, sugar, diabetes, etc. Across like, organized sector and unorganized sector, कम से कम 100 million लोग कुछ ना कुछ form of diagnostics करते हैं. Within that 100 million, actually about 30-40% is relevant audience for Ivory, because they are people above the age of 40, etc. So I think Ivory has a path to also partner with some of these large scale diagnostic companies and make the access extremely simple to just knowing whether you are at risk or not. So what motivates you guys to work on Ivory and take it to the next level? Yeah. What's the motivation? Sure. So we have personally have a lot of experience, unfortunately, in seeing neurodegenerations in our respective families. So Kerala today is actually, unfortunately, the dementia capital of India. Like per capita incidences of dementia are highest in Kerala. Okay. And I have seen, so Rahul, my co-founder, has seen like neurodegeneration, multiple cases of neurodegeneration in his extended family. Okay. In fact, Rahul was so paranoid about this that he used to buy his father, Sudoku books, so that, he keeps his father cognitively trained, right? I had seen Parkinson's, which is another form of neurodegeneration in my father. And I saw my father, he used to be a proper working man, extremely motivated by work, but
पहले उनको ड्राइविंग छोड़नी पड़ी, फिर उसके बाद उनको यू नो लाइक ही हैड टू गिव अप हिज वर्क ऑल्सो, फिर वर्क के बाद में फिर जब घर पे बैठते थे तो ट्रेमर्स एक्सेट्रा वुड बिकम यू नो दे वुड ऑलवेज कंसर्न कि हाउ डू यू स्टॉप दिस, राइट? तो दैट इमेज ऑलवेज स्टेड विथ मी, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही नीडेड हेल्प इवन टू गो टू द बाथरूम बिकॉज इट बिकेम सो सिवियर, एंड मेडिकेशन ले रहे थे बट मेडिकेशन से कुछ हेल्प नहीं हो रहा था. इट बेसिकली जस्ट मैनेजेस योर कंडीशन. सो आई थिंक आई हैड that experience of seeing something which you know medication can't reverse is very personal to you know like both me and Rahul. So that is in a very strange way we did not begin with this. Hamara main hamesha ek cognitive enhancement was the first root of an idea that we began with, but the more and more we deeper and deeper we went, that हमको लगा कि, and initially we were not doing clinical because हमको लगा कि clinical solutions बहुत होंगे, but फिर हमने जब ये समझा कि इस फील्ड में क्या solutions available हैं, आज कस्टमर जर्नी क्या है, वी रियलाइज दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच ह्यूमैनिटी इज फेसिंग, एंड you know it requires you know a company from India to do something. In fact West हमसे इससे थोड़ा सा आगे है. वहाँ पे the quality of let's say service that you get with regard to dementia detection techs etc that are bundled in your insurance packages, वो वहाँ पे काफी evolved है, काफी multiple options आपको हैं. इंडिया में there are very few and far in between, और जैसा मैंने कहा ज्यादातर paper pencil है. So that is what motivated us to be on this journey. I mean काफी पर्सनल है आपके लिए, और इसीलिए आप इतने पैशन से इसको ड्राइव भी कर रहे हो, एंड आई होप जहाँ भी हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं नेक्स्ट 10 years में वहाँ तक ले जा सकें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है. आपकी इतनी पर्सनल जर्नी रही है, और मैं भी अगर सोचता हूँ अपने पेरेंट्स को लेके, तो आई थिंक हाँ, अगर कुछ ऐसा है तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली यूज इट, वी शुड डेफिनेटली गिव इट द थॉट कि यार हाँ, मतलब आप अर्ली डिटेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करो, रादर देन जब हो जाएगा तब तो देयर इज नो solution to this, right? Correct, as you told. correct. अच्छा, अभी इंडिया में डिमेंशिया केसेस कितने होते हैं, कुछ अगर आइडिया? So the official reported number is 10 million. 10 million, लेकिन 10 million is a काफी अंडर रिपोर्टेड नंबर है, क्योंकि कितने केसेस के लिए लोग डिमेंशिया डायग्नोसिस लेते नहीं है. बाय द टाइम इट गोज, लाइक मैंने कहा कि वो एक काफी एक जो शार्प कर्व है, उस कर्व पे आप कब डिटेक्शन के लिए जाओगे, इट इज अप टू यू. सो दिस इज डायग्नोज्ड केसेस. द अर्ली स्टेज विच इज नोन एज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लोग बोलते हैं कि 90% ऑफ केसेस एक्चुअली गो अनडायग्नोज्ड. सो देयर इज नो, सो ऑफिशियल नंबर इज अबाउट 10 million. बट इफ यू एक्सटेंड दिस व्हाट इज नोन एज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उसको अगर आप लोगे तो इंडिया में करीब 30 million पीपल वुड बी फेसिंग रिस्क ऑफ डिमेंशिया, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट. काफ़ी बड़ा नंबर है एग्जैक्टली. और आई थिंक जैसे जैसे हम फ्यूचर में बढ़ रहे हैं, नंबर थोड़ा सा बड़ा ही हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर एजिंग पॉपुलेशन. यस, अब हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है. दो फैक्टर्स जो इंडिया के लिए यू नो जरूरी है जानना. एक ही, इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज काफी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लॉट ऑफ आवर पेरेंट्स आर एक्चुअली नॉट स्टेइंग विद देयर किड्स, व्हिच अलाउज फॉर सोशल मिंगलिंग, एनेबलमेंट एक्सेट्रा. बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसे मैं भी एक्चुअली बाहर गया, यू नो, एंड आजकल तो tier 3 से tier 2, tier 2 से tier 1, tier 1 से abroad. This movement is only going to continue. So as nuclear family increases, loneliness and isolation increases, and that's actually one of the key triggers of neurodegenerative risk. अगर आप extended period में से socially if you're feeling isolated, lonely feel कर रहे हो, तो काफी बड़ा risk है. Right. Okay. So अब next section में move कर जाते हैं, personal question, and we'll wrap it up. Sure. Okay. So any person or anybody who influences you, कोई है ऐसा? My father. Your father. Okay. And work-life balance क्या है आपके लिए? Look, I have been fortunate today to work on something which doesn't matter the time of day or night. मेरे लिए वो balance ही है. अगर मैं काम कर रहा हूँ, that is amazing balance for me. But things that I do outside of work, I play tennis and I keep myself fit. I go to the gym a couple of times a week, and tennis I play 4 to 5 times a week. So that's my sort of outside of work indulgence. Right. Any advice you will give to your 18-year-old self? you can think about it. It's fine. I will. It's you know, it's the first time somebody has asked me this. Okay. And I'll tell you specifically. Okay. Drink less sugared drinks. Okay. The age is such that you will definitely eat packed food and whatever fried food, etc. But eat less of that. Okay. And definitely maintain a schedule of some physical activity for 1 hour a day.
Okay. The third one in this is actually supremely important because science says that the longer period of duration that you have done something physically, अगर आपने अपने आप को exercise करके रखा है, Right. the sharper the benefits in your later years. So if I were 18, actually that I would put as number one, that ensure that every day 1 hour is just dedicated to something to do with fitness, sport, something that involves physical movement. I think ये मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने बोला ना, फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट. तो होता क्या है कि आई गेट बिजी विद एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, और मैं सोचता हूँ कल कर लूंगा. तो आई ट्राई टू डू इट, बट हफ्ते में 2 या 3 दिन ही हो पाता है. बिल्कुल. बट आई थिंक वो हर दिन होना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल जैसे हम कहते हैं. तो पहले उस पर फोकस करना चाहिए, देन अदर थिंग कम्स लेटर, राइट? So I think I'll tell you one personal anecdote with that, Aditya. So when I was in school, from let's say 5th standard to all the way up to 12th standard, I was always competing in some sport. Okay. Always competing, like in cricket, basketball. And that gave me a foundation which, in spite of an extremely erratic 20s, right, in 30s also I was fit enough. Okay. मैंने 20s में कुछ भी नहीं किया. But in my 30s also, right, I was much fitter than, most of my peers. Right. Although I had done nothing in my 20s. So now imagine if I had maintained my 20s also extremely at that same cadence. जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब, and again 20s does this to us, which is why I specifically said physical movement as advice. अगर आप में वो 20s में भी continue करता ना, my 40s and 50s I would have been so much more fitter. Wow. And I would have, because once that's a habit. So I think people really underestimate the importance that physical activity can have in their lives. Right. And आपने शुगर बोला, तो Yes. अभी मतलब मैं भी बहुत शुगर लेता था, बट मैंने अभी छोड़ा, 1 आध साल ही हुआ मुझे हुए. तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है शुगर छोड़ना? बिकॉज यू आर एडवाइजिंग योर 18-year-old self to do that. Yes, because 2 reasons. One is there is a lot of advocacy around us in our world, which tempts us towards sugar. The largest marketing budgets are unfortunately with companies which sell sugar. That's number one. So you have to be guarded against that, and you just have to be aware. Right. Excess sugar, which puts you in a condition of diabetes, is also something that अगर आप head से लेकर toe तक कोई भी condition आप सोचोगे ना, it can impair your vision in your later years, diabetes. It can definitely impair your, metabolic health. It will have an impact on your cardiovascular health. Diabetes is also a risk factor for dementia. Right. So to stay away from sugar, and it doesn't mean that, like just staying away from sugar will help you prevent diabetes. There are, of course, multiple factors: gene pool, physical activity, etc., obesity, etc. But it is such a often underlooked aspect कि हमको समझ में नहीं आता कि मतलब वो excess sugar का risk हमको कहाँ लेके जा सकता है. तो that's why I specifically said, and this I think lot of people say sugar, but sugar से what are the other adverse outcomes that happen because of excess sugar is important to understand. तो कितनी शुगर मतलब हम ले सकते हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन है कि मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज का. तो that's why I am not an expert at this, so I'll refrain it, but I normally rely on Google search, etc. For the last I checked, it was like some 14 to 18 grams से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. But again, like don't quote me on this. I'm not an expert. Yeah. Okay, sure. Any books or movie recommendation you can give to audience? What your favorite book? My favorite book currently from the last 1 year, I've been citing lots of examples from it, is actually Outlive. Outlive by Dr. Peter Attia. He's a Stanford medicine doctor and an extremely accomplished person who's understood a lot of these aspects of longevity. In fact, he calls out 4 risks of humanity. So one of them is cardiovascular, metabolic health, cancer, and diabetes, and dementia. So dementia is actually number 4. So his book is something that I definitely recommend. Lots of inputs on how to exercise with a much sharper precision as well. The other book, on the fiction side, I recently read a book called Good Material, which is a light, breezy, rom-comish book. Very well written. It's about a failed stand-up comedian who goes through a breakup of a relationship and then what happens. Outstanding. Right. Okay, so how do you enjoy life? What's your mantra? Tennis, reading, spending time with my wife and dog. I think those 3 things are probably, not in that order. The order is immaterial. Right. But I think those are the things when, I'm at ease. And also, I think today, of course, a lot of my high is derived from when I deliver an outstanding outcome for, somebody who goes through an Ivory experience. So that's a different high altogether. Right. What's success to you? I think somebody looking and saying that Ivory made a difference to me or my mother or my father. I think that is
unimaginable. It's bigger than any bank balance that I can have or any car that I drive. Okay, good. Framework of a startup. Basically, you are doing a startup, so I think that will help a lot of entrepreneurs watching this. So what is the framework according to you? I think continue testing stuff with customers. Okay. And listen to real signs of success. Real signs of success are when a customer refers you to others. Okay. That is a real sign of success. Okay. I think till then, you're pushing a product. Right. And the day we knew that Ivory is into something very powerful is when a customer told me that I want to sign up my mother also for this. Can I sign up my family for this? Unsolicited. A lot of us think that, and again, this is a learning that I've had along the way, that pushing things down people's throats is the way. If you offer a very strong product, people will automatically recommend others to you. Every day, I get like messages from customers saying that I want to sign up my office colleague, I want to sign up my parent, I want to sign up my spouse. That is the power of a good product. Right. And the next question is also a succession to this. Any advice you would give to young entrepreneurs which you think is important? I think the same. Listen to customers and iterate basis what they are looking for. Right. Very underrated. This is an advice that I have heard the maximum number of times. Right. This is, however, also the advice I have to repeat to myself the maximum number of times, that what is the customer saying? Right. Because sometimes you have to read between the lines. Sometimes you have to read why is he signing up. So I think just having an extremely sharp, observational sense around what our customer is saying. Right. And do you think passion is very important for starting anything? Passion is important. You have to feel like that problem that you're solving, A, you're the best place to solve it. Right. B, you will solve it. I think, and it can only come because, you're passionate about something. You can't not have energy. And I equate passion to energy. Right. So my energy into, let's say, solving neurodegeneration, risk detection for dementia is way higher than, let's say, solving my energy I'm talking about, then let's say solving for what soil conditions are best for, different types of plants, or, what kind of EVs should be made. Like my energy is highest, in this space because I'm very passionate about this. So I think passion translates into energy, into work. Right. Okay. So that's it from our side. Thank you so much for joining us and, giving immense knowledge to the audience. I hope Ivory takes a leap forward in the future and we see it where we want to see it. Right. Thank you, Aditya. I hope the same for you. I think it's incredible of you to reach out to me and, ask me so many questions about Ivory. Very happy to be a part and wish you all the success. Thank you. Thank you so much. Thank you.